Good afternoon, dear friends. We, the Faculty Board of Studies, myself, Nisha, and CA Shraddha. welcome to you all on today's session on paper 60, Economic Laws, which is an elective paper. In this session, we shall be discussing upon various issues, whether it may be general in nature or technical, so that you may strive towards the excellence, though you are best. So, in fact, when we talk about the excellence, so what do you actually understand by excellence? Excellence means doing small little things well. I mean to say, when you're doing a certain many things in a good order, I mean to say that when you do many things, but you put 1% better, rather than doing thousands of works, one single work in 1,000% with a devotion of 1,000%, it will make a difference. That means doing of little things, it will make a difference. You have to put your efforts to make it the best. Sometimes it happens when you're trying to put all your efforts in one single task. So definitely it won't lead to the excellence. Means many small things, a packet of small efforts leads to the excellence. Yes. Further, let me tell you the one formula which needs to be taken care while reading, understanding and preparing for the subject and getting the good result of your performance. This is not only equally applicable for this subject, but also to the other subjects. For example, suppose if I hear something, so I forget. But if I see something, I remember. And I do, then I understand. This is very simple formula. That means when you just only hear something, you retain very less. And at that time, it is possible 110% that you forget that particular thing. But when you see the same thing, so you remember that particular thing. And when you do it, you practice, then definitely you understand the thing. So this is the formula, my dear friends. Note it that this is the formula for the success. Yes. And no one is born genius, in fact. You have to become a genius. Okay, and doing of certain things in, you can say, unordinary circumstances will lead to a good action. So these are the small things which will lead you towards the unextraordinary circumstances. These are the small things which you keep in mind, and definitely these small things will make a big change, a big difference in your attempt and performance. So with this, we will be sharing in today's session the various ideas, suggestions, advices that we have received from new students at many times when they come ask for counseling and all that. They have come across with certain small minor mistakes generally they do commit. So in this session, we shall be taking up these issues and sharing with you how you can overcome all these small issues. Also, we shall not only be sharing this kind of thing, but also certain ideas and tips, how you can present yourself well in the examination situation, and how you can go and enhance your performance over there, and what are the examination tips while attempting the paper, also the queries which you are facing while going to the paper. So with this, I would like to carry forward our sessions. So, dear students, as you know that we are here to counsel you with respect to the mock test paper series that has been held for paper 60, Economic Laws. But we will also be guiding you not only in the mock test series, but also for the journal tips for the examination that will be helping you in writing the 3 hours paper. As you know, only less than 20 days are left for this paper. And with that, keeping that in mind, we are very sure that by now you must have already completed the study. You are at the revising stage, wherein you will be just revising the subject and brushing up the concepts that you have already learned. Also, you are conceptually clear, you are just brushing up the dust that might have gathered on the concepts that you are already knowing. So, keeping that in mind, we will be proceeding further for this session. So, Shraddha, many times students ask the general thing, hey ma'am, what are the sources available on the website? Because many times students are not aware of many sources that are made available for the students.
So let's have a quick glance at what are the relevant publications, what are the other resources that are available with the students, so that not only they may be guided, but yes, as you said, already they must be through with the detailed study at this point of time, but there are other things which can be done after once they are through with the study, whether it may be the mock test papers or whether it may be the looking after of the suggested answers. So let's give a brief to our students where they can find all these facilities available on the website. Since the session is a complete package, though we are expecting you must have studied, but still we will be guiding you on what you must have read. And if in case something is left, you can still have a glance of it. And as Nisha ma'am already said, that small steps that you take towards your path will obviously lead to your successful journey as well as the completion of the course. So the various publications that are available for you students are the study material, October 2021 edition. This edition is updated for all amendments up to 31st October 2021. So all the 2021. For May 2020 examination, amendments, circulars, notification from the relevant legislations up to 31st October 2021 are applicable for you. That means the study material is a complete package for you, and you need not refer the amendments apart from these that are already incorporated in the study material. One thing that I would like to say to the students, please refer the latest revised study material, but because this study material has been comprehensively revised. And in this study material, many additional explanations, examples, and various rules in support of various rules explaining the provision as well as for the understanding of the students has been incorporated in the study material. So students are requested, those who are appealing for the number and those who already had done it, but they might be aware that this is a completely revised study material. So one has to go with the latest study material available for you. Yes. And apart from that, there is one more benefit of that you must have availed till now, that you need not refer to any outside amendments because everything is incorporated in it. But then also I would like to bring one thing more to your notice. As you know, this is an open book examination. So everything is a part of the syllabus. Anything that is not even incorporated in the study material is a part of the syllabus as it is an open book examination. However, you should complete your studies from the study material it is advised or any detail so that you're well versed with the concepts and you know the whereabouts of the things that where they are placed. As in, take only the materials from which you have studied, because suppose a question comes to you of some section. And at that time, you remember, oh, this was the answer and this was the section. You need not memorize the exact language of the section or the gist of the section. You just need to understand conceptually the section. And if you know, and if you're taking the study material or whatever materials that you refer to study, then at that point of time, you will be in a position to directly go to the page because our minds have a photographic memory. So as she said that once you see a thing, so that is known as visualization. So visualization of even the chapters that you have done, the pages, you will directly go to that page number and you can just write the answer because you don't have to learn it, memorize it. Because this is an open book, so even it does not require to learn, but you must be having an idea where that particular provision is there, because at the moment in the examination time, you did not need to flip up the pages. Oh, where it was. So it's better that you are well conversant where the act is, where the particular that provision is there, and after what it comes arrangement of the sections. So you must be very well aware of these things, and this is only possible when you have read that particular study material, whether it may be any notes, any material. But you should take only that material as set by the shelter, which you were using for your reading and everything. So take that material with you so that it will help you to know exactly where that particular provision is within the study matter that you are having. So that you can easily find out the relevant page, relevant provision, which to which that particular case study or questions actually relates to.
and you can directly go over there and you can start writing your answers. So the next thing that we have for you is case study digest. So once you have studied from the study material, then you need to practice some questions. And the case study digest is a very, very, very nice compilation of total 55 case studies. And this 55 case studies incorporates 5 case studies of surface. I think students must be well aware that the Surface Act has been added from May 2022 examination. And with respect to the same, the announcement is already there on the website. So my dear student, you should be updated. Whatever is being relevant for you, you should regularly go and visit your website. Sometimes many important updations related to the subjects are being hosted on the website. So you should be regular in keeping yourself in touch with the website. So this was the announcement with respect to the enforcement applicability of the Surface Act has been given over there. And this has been made applicable from May 22 examinations. And this Surface Act covers the entire act along with certain RBI regulations. So you need to read the study material simultaneously with the case study digest in order to solve the case studies. And one more thing. Since we know you must have already prepared and you are at the revising stage. So you must have seen the past suggested answers also. So I'm skipping and we'll be coming to the other parts also. So you can see that sometimes the case studies from the study digest also are there in the examination. So you can, as a question bank, you can use the case study digest as well as the suggested answers. But be very careful about one. This is very important. Case study digest contains 55 case studies. And they might seem similar to you when you are referring the suggested answers. You may think that, oh, this is the same. But be very cautious because sometimes even a slight change, either in this case study, few lines here and there are changed, and that leads to an altogether different answer. And sometimes what happens, the questions are also being twisted a little bit. They are either asked in the negative or certain additional thing has been added. Yes. Which changes altogether your answer. Like you may feel that case study is similar, and you may even feel the MCQ or the question is same. But if you read carefully, then you will understand there is a slight change, even the addition of the word not will altogether change your answer. So be very careful while reading. So use it as a reference material, but while if you are using it in the examination, don't just be blind towards that whatever is given. Keep an open eye and then do the examination. Absolutely. Even the case study digest is the revised edition. As you can see, the January 2022 edition. These case studies have been revised in line with the amendments. Whatever are the relevant amendments applicable for you. In line with that amendment, this case study digest has been revised for reference of you students. And they have been recently published, so everything is revised. Yeah. Then the next thing that we have is booklet on case studies. This is also a revised edition and it was published in January 2022. So what is this? That the recent case laws are there and they are decided by the apex court, that is the Supreme Court of India. We have tried to incorporate mostly the decisions of Supreme Court. And the thing is, if you have referred this, then sometimes what happens that a question comes and if you are knowing the answer, then you can support it with the help of the case law. One thing is this. Apart from this, sometimes the decided decisions that have been there in the case booklet. What happens is the examiner may ask a question based on that only. If you have read it, you can obviously write it in the examination. But if you're not knowing the case law, then what will happen? You will not be in a position, you will be applying your mind there. That will lead to sheer wastage of time since the resource was already available to you. And if you would have read it, you could have directly written the correct answer.
even sometimes happens certain question is based on the provision. But however, when while interpreting or on the basis of certain case laws, that provision is applicable in different manner. One means to say that an interpreted in different circumstances. So in a different way. So what is being required when you are knowing about the case laws, then you can also cite the case laws over there. And according to the case laws, you can lay down the principle laid down in that particular case law, and then accordingly you will give your answers. Okay, I would like to say one more thing with respect to this case study batches. Since we told you that there are 55 case studies with inclusion of SARFAESI Act, there is one more thing that has been unique to this case study digest. The MCQs that are there in the case studies are with these. Don't be afraid in looking at the bulkiness of the case study digest, because this time we have also incorporated these things so that, as we all know, that this is a distance learning program, Chartered Accountancy. So the reasoning is there so that students don't face any problem while they are doing the MCQs. So next, moving on to our mock test paper. The mock test paper is there. It's in series 2. Mock test paper, when you are attempting your mock, what is a mock test paper? A mock test paper is, as the name suggests, it's a mock, that is not the actual thing, but something similar to that of a test paper. So if you attempt this mock test paper in just the examination setup, like 4 hours with the reading time and everything, and then you attempt with the time bound manner, put your watch there, and no distractions of your mobiles, or keep all your study materials or all the materials that you would be taking with you in the examination, and attempt the paper, you will see the difference while answering the actual examination. So don't take these mock test papers very lightly. Just try to do it in the examination setup, and it will definitely lead you to very good Even results. students can assess their performance, Yes. whatever they have studied, and how much they need more focus on certain points, so they can come to know through by attempting the mock test papers. So it's better to go and undergo this mock test paper under the examination situations, and try to attempt with full devotion and dedication. There should be no cheating at all, and this should be done only once you are thoroughly completed your studies and you have revised the subject, and then only you try to attempt the mock test. So the other thing that we have already told you, other relevant sources for May 2022 examination, relevant announcement, which is with respect to applicability of SARFAESI Act, and the other is referencer for quick revision. So what is this referencer for quick revision? I will be just guiding you through this also. Let's go to how you will be seeing these various resources. We have told you, but until and unless the knowledge is put into use, it's of no use. So let's start putting this knowledge. So many things are available, Shraddha, but still the students are not aware where these all things are available. So just like let's have a walkthrough of our institute website in order to make them know what are the various sources, different types of the sources, they are relevant for them and they are applicable, and where they can find out these sources. Yes. Just a moment. Yes. Okay. So as you know, I hope you all are able to see my screen. So as you all know that this is ici.org, and then we will go to students tab. In that we can go to BOS Knowledge Portal. See, there is the second tab which is saying mock test paper for May 2022 examination, series 2. And here you can see everything is available. So these mock test series are, you can find them here. Now going on to the other thing. So under the BOS Knowledge Portal, go to Final Course. Under the BOS Knowledge Portal, go to the Final Course, and under that, go to paper 60, which is Economic Laws. See, the study material is here. The latest study material is available for you. There is the SARFAESI Act, and
Then we have significant case laws. See, there are two tabs. One is significant case law for May 2021 examination and onwards. Then we have the revised edition also here. So refer the latest edition that is applicable for your attempt. The announcement that we have talked about is here. Then relevant amendments, which are, this is for 2021. The latest case study digest is very much available for you in the soft copy also, and hard also is available. Then then there is a suggested answers. The latest ones are also available. Then the thing we said was referencer for quick revision. So what is this? Referencer for quick revision is a compilation of all the case studies that have been put in your various students' journal. So here we have in total 11 case studies. It's kind of an additional resource for you from where you can practice. And as you can see that the latest is for December 2021. And so these all are very much applicable for you. For the earlier issues like for April 2020 or May 2021, there is something which is not amended as per the amendments of the 31st of October 2021. At final level, it is expected that the students are very much in tune with the latest amendments, and they can obviously know, they are obviously knowing the latest provision and can amend that particular question or answer accordingly. These all has been compiled at one place, and these are all the case studies which are other than what is given in the your case studies booklet. And of course, you need to amend as per the latest amendment certain case studies. But yes, this gives you an idea, and this also gives, and that also will make you to practice. You can practice and solve these case studies, so that if you will benefit in how the questions are being framed, how the case studies are being asked, and how you can give the answers to the respective questions given in the case studies. So as man said, practice. So we all know practice and practice, because practice makes a man and a woman perfect. The more you practice, the more you will be in a position to perform better in your examination. If you think that, yes, I know the concepts and it's an open book examination, there is no need for me to learn everything. Yes, there is no need for you to learn things. However, it is equally true for you people that if you don't practice the question, you will not be in a position to answer it. Knowing something and putting that knowledge onto paper are two different things. But being successful for the examination, you need to combine both the things, and you need to put your heart and soul not only while studying the paper, while studying and preparing for the subject, but also while you will be attempting the paper. Look, students, it's very true that you have to, we always say that conceptual clarity is there. You should be in a position to write the answers. You should know this, you should know that. But until and unless जब तक आप रणभूमि में उतर कर उस तलवार, your तलवार is your pen और paper, जब तक आप लिख के नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा. Many a times students face this problem, especially with this paper, economic laws or any other paper, like which is like there is an open book examination. Students face this problem that they think that we know everything, but while they are attempting the paper, they are not able to utilize those 4 hours, because concept is like it's already there, but they don't know how to write it. So आपको लिख के तो proper आना पड़ेगा, क्योंकि referencing material आपके पास आपका सारा है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, वहां से देख के आपको लिखना और प्रॉपर लैंग्वेज आपको वहां पे दिखाई देगी. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैम बच्चे बहुत बार बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि हमने लिखा तो, लेकिन आपने ना सजेस्टेड में ज्यादा लिखा है. सजेस्टेड में बच्चों ज्यादा होता है बिकॉज वहां पर आपको एग्जैक्ट प्रोविजन लिखा जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम आपको सिर्फ 2 लाइन लिख के दे दें, विल यू बी एबल टू मेक आउट व्हाट इट इज? That is not expected, especially with the open book examination. आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए सारा मटेरियल है, तो वहां पर आपकी राइटिंग स्पीड भी बहुत मैटर करेगी. क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा होता है ना,
तो आप अक्सर ये सोचते हैं हम सब कुछ उतार दें पेपर Yes. पे. And at this point of time in the paper, they actually test your how Time you manage. analyze. This is what the time management is of course there, but they test your analyzing power. मतलब वो देखते हैं कि आप कॉन्क्रीट जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो सिचुएशन दी हुई है, उसमें आप लीगल प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करेंगे और गिवन सिचुएशन में आप कैसे एनालाइज करेंगे विद प्रॉपर कंक्लूजन इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट लीगल प्रोविजन. सो दे टेस्ट बेसिकली दिस थिंग. अब क्या होता है कि क्वेश्चन में चूंकि आपके पास बहुत कुछ कंटेंट होता है, तो अब आपको सोचने वाली बात है कि व्हाट यू हैव टू राइट इन ऑर्डर टू गिव योर आंसर्स. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको उतना ही रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द लीगल प्रोविजन देना है जितना आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है. तो उस केस में आप सबसे पहले ये देखिएगा कोई क्वेश्चन है, मार्क्स कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, देन अकॉर्डिंगली आपको उस क्वेश्चन को इन ऑर्डर टू बी गिविंग इन कंप्लीट सेंस आपको कितना क्वेश्चन वहां देना है, कितना रेलेवेंट प्रोविजन का कितना पार्ट वहां लेट आउट करना है जिससे आपका आंसर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट मैनर में कंक्लूड हो सके. तो इन कमेंसुरेशन विद द मार्क्स यू हैव टू गिव योर लीगल प्रोविजन एंड द आंसर्स. अब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं. तो समटाइम्स हैपन जब आप सब कुछ लिखने के चक्कर में कई बार आप मिस आउट कर देते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट होता है जिससे आपका मेन आंसर बेस्ड होता है. तो आप ये जरूर देखें और इस चीज को इंश्योर करें कि दैट यू आर गिविंग ओनली टू द पॉइंट और आप अपनी एप्लीकेबिलिटी और एनालाइजिंग पावर को वहां पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप उस हिसाब से अपना आंसर दीजिए. क्योंकि देखिए टाइम तो आपके पास 4 आवर्स ही रहेगा और जो क्वेश्चन में आपको मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 से ज्यादा नंबर मिल नहीं जाएंगे. तो इट्स एडवाइजेबल कि जितना जरूरी हो उतना ही लिखिए दो यू हैव द कंटेंट. लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे बट वो टाइम आपका कहीं और के क्वेश्चन जिसमें आपको मार्क्स मिलने थे अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे और आप उसका भी टाइम इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल लूज. सो नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ऑफ बीओएस में हमारे पास आपके लिए एक और चीज है व्हिच इज बीओएस मोबाइल ऐप. स्टूडेंट्स जस्ट डाउनलोड इट ऑन योर मोबाइल फोन. हालांकि हम इस टाइम पे आपको एडवाइस करेंगे रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एज लेस देन 20 days are left for this paper and if somebody is giving both groups then obviously the papers are starting from 14th of May so it's even less for you people. So restrict the use of mobile phones. However, just download BOS mobile phone app and for Android phone you can download it from Google Play Store and for this Apple you can use the Apple Play Stores and you can see everything that we have told you about at your fingertips because every other resource is available in these apps. और साथ में सबको ये कहूंगी श्रद्धा कि बेस्ट थिंग ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज दैट यू कैन लर्न एनी टाइम. Yes. अब अगर आपके पास ये फैसिलिटी है आपके मोबाइल पे, ठीक है इस समय आपको मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहना है लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए यूज कर. बिल्कुल. अब कभी कभी ये होता है कि आप पढ़ते पढ़ते किताब से पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए तो व्हाट इज द थिंग आपने थोड़ा सा मोबाइल उठा लिया और मोबाइल पे आप अपने मोबाइल ऐप पे चले गए. वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज और डिफरेंट आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल है. डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इवन वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके अवेलेबल है नॉट पर्टिकुलरली टू दिस इलेक्टिव पेपर्स बट यस द अदर subjects. yes. But however, certain topics are common in the core papers. So you can refer that particular lectures of the core papers. That will definitely help you. और वो आपकी हेल्प भी करेंगे आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए and definitely in that way you can utilize the knowledge in the best manner. So the next thing is what is the paper pattern and for that you can refer the past year papers which we have set as suggested answers and illustrative paper pattern. So what is this illustrative paper pattern? Illustrative, as you know, this is an open book examination and it's a 4 hours paper. There will be total 5 case studies. There will be total 5 case studies and out of these 5 case studies you have to attempt any 4. All of these case studies will be of 25 marks each and this 25 marks is further drilled down to 60% and 40%.
40% is your MCQ, that is of 10 marks, and there will be 5 MCQs of 2 marks each. These 5 MCQs will be on application and analysis basis. So what does this mean? That they will not be simple MCQs, rather they will test your knowledge of applying the provisions in the given situations. Rest 16%, your 15 marks, are your descriptive portion, and they will be further drilled down into 4 or 5 subparts. The best part about these descriptive questions is, if you see the case studies, if you have seen the suggested or the earlier past year papers, you would see that in the case study, more than one act is there. The integration of various acts is there. So many a times, not once, but many a times it has been seen that a single question is asked. Single, I mean, if there is a 5 marks or some marks question, it will not just be based on one act, but it will be asking you that what are the implication under the various acts for the same circumstances. Even जैसा कि कहा हमने कि students would be required at any four. अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से सेलेक्ट करें विद इन द गिवन वेरी, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर की इनिशियल जैसे मिलता है, आपको रीडिंग टाइम जो दिया जाता है, उस 15 मिनट्स में ही आपको ये डिसाइड करना है कि विच क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट. अब इसमें क्योंकि फैक्ट्स भी होते हैं अगेन द क्वेश्चन, तो इट विल रन अराउंड 5 to 6 पेजेस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस. तो इन दैट केस अब आपको एक क्विक ग्लांस देना है टू ऑल द केस स्टडी. अब क्विक ग्लांस देने के लिए अब उसमें से आपने पढ़ लिया, नाउ यू आर कि मैं कौन सा करूं, मैं कैसे पता कर लूं कि जब मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. उसके लिए क्या होता है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल स्टाइल है, बट वी आर हियर सो जस्ट शेयरिंग विद यू आवर थॉट प्रोसेस कि अगर आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं. आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए. This may also be one of the way, not exactly the way, but one of the way. This is not a sure shot formula. However, many a times it has worked. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, तो उसी से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि whether you will be able to solve that particular question or not. क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं ये तो माइंड में क्लिक कर जाता है कि yes we can do it, and while giving a glance to the facts of the case studies, आपको ये भी पता चलेगा कि ये ट्रिकी है, सिंपल है, या किस टाइप का नेचर की केस स्टडीज है. तो अकॉर्डिंगली while during that 15 minutes you have to decide while reading and giving a good मतलब a quick glance to all the case studies, and at that very moment you just fix the arrangement of the case studies which you are going to attempt in an order. आपको जो सबसे अच्छा आता है, जो अपने आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है एंड यू आर फॉर श्योर कि हाँ ये मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप उस केस स्टडी से अपना पेपर बिगिन करिए. So next is your illustrative paper pattern. We have told you there will be 5 MCQ based. This is for each case study. If you see, it's each case study. So just be careful. 5 MCQ based questions for 2 marks each, totaling 10 marks, and descriptive questions in 2 or more parts for 15 marks in total. Duration and mode of examination, it's an open book examination that you can take. That means that you can take any material with you which is available, no mobile phones, no tab, nothing, just your hard copies. Even आपके खुद hand prepared notes हो सकते हैं जो अपने साथ आपने बनाए हैं while revising the subject at that moment. आप वो अपने hand notes भी use कर सकते हैं. Plus कोई भी आप अगर detailed book जो भी आपने पढ़ी है या साथ में institute का material which is of course a Bible, because only then you can know what is the coverage defined over there. क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स है, जो लॉ है स्पेसिफिकली, इट इज नो एंड बहुत ही इन डेप्थ है, वो सब्जेक्ट बहुत ही वाइड है, इतने रूल्स, इतने रेगुलेशंस कि अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आप कहेंगे कि मैं क्या क्या पढ़ूं. सो इन ऑर्डर टू समवेयर कि आपको कितना पढ़ना है, उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल जरूर रेफर करना चाहिए, जिससे कि आपको ये आइडिया हो कि हमें इस कम से कम हमें इस दायरे तक तो पढ़ना है. तो ओपन बुक का ऐसा कोई लिमिटेड फिक्स नहीं है, बट
Then also somewhere you have to limit कि भाई मुझे इतना तो कम से कम मैं पढ़ लूँ, कम से कम. Yes. So kindly take all this material with you in the examination, and there you can refer whatever is being required. Duration clear है आपको 4 दिन के. Applicability of legislative amendments. जी हाँ, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं. आपको पता है कि मई 22 के लिए आपको कट ऑफ पीरियड का अच्छे से पता है कि 31 अक्टूबर 2021 प्लस आपको हमने जैसे पहले बता दिया श्रद्धा मैम ने कि ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है आपके लेटेस्ट मटेरियल के अंदर. सो आपको अलग से कोई भी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स प्रोवाइड नहीं की गई है. सिंस इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू यू इन अ कंप्लीट मैनर सारी अमेंडमेंट्स के साथ. How to manage your time in examination? As ma'am has said that 15 minutes are given for reading, we have told you go through all the questions quickly. Rather, we would say go through all the MC questions. Is like here we are not saying about the case study as a whole because it's not possible that to read the full case study there in those 15 minutes. So have a quick glance of the questions and the descriptive questions and MCQs. This will give you also an insight that what all acts will be covered in the case study. देखो श्रद्धा क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस है ना इंडिपेंडेंट सिनेरियो बेस्ड भी पूछ लेते हैं. मतलब मोस्टली ये होता है कि अब यही होना भी चाहिए जब हम केस स्टडीज की बात करते हैं कि all the questions should be pertaining to the facts given in the case studies. तभी आप given situation में किसी भी legal provision को application आप बता सकते हैं. लेकिन then also sometimes happens certain questions are asked in the independent scenario. होता वो भी एप्लीकेशन बेस्ड ही है, लेकिन आपको एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन दे दी जाती है विद सर्टेन इफ एंड बट्स. मतलब जो केस स्टडी में यूज है उसके विपरीत यानी उसके अपोजिट कोई ऐसा चेंज करके या कुछ एडिशन करके उसके थोड़ा सा उसको डिफरेंट एंगल से उसको पोर्ट्रे किया जाता है ताकि वो टेस्ट कर सके आपको, आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सके कि आप अगर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे. क्योंकि फैक्ट्स में कुछ और है, वहां पे किसी और तरह से फैक्ट्स ले डाउन है और क्वेश्चन को किसी तरह घुमा के कुछ और एस्पेक्ट से पूछ लिया है. तो समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. उन्हें लगता है कि केस स्टडी में तो फैक्ट्स में तो ये ले डाउन था, तो वो उस हिसाब से आंसर देते हैं. तो दिस आल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर कि आप क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करें. So the key word here is read the questions carefully. The next is select the question that you would be attempting and the case study that you would be attempting. We can say that it's one and the same thing because, and also once you have decided that what case study you will be attempting on the basis of the question, there is one more thing. While you are reading the question, okay, so this is related to section so and so. While you will be reading the case study in depth while reading the case study fully, at that time you will be more focused. Okay, so this is coming from my question will be answered from this paragraph or something. So reading the questions even help in this. But this is only for the examination. This is not at the preparation stage. Allocate and estimate time for each question based on the difficulty level and marks added, keeping aside 10 to 15 minutes for revision. It is expected to keep 10 to 15 minutes of revision, but this is subjective if you have the time. This 10 to 15 minutes is not like that, come what may, you should keep it. It's much better if you attempt every question. You should definitely attempt whole 100 marks. Like seriously, just see that if you are attempting 90 marks, then the difference of 10 marks is already gone. You cannot have even 1 mark. Saying that also, we would like to add, it does not mean that for these 10 marks you write anything vague. Just be crisp and to the point in answering, and don't write vague answers because the paper checkers and examiners are very learned people and they will be knowing the student that what they are doing. So, and what do we mean by that? Like 25 marks. If we see, mota you have 4 hours and you have 4 case studies. So 1 hour per case. Okay. So, and in this 1 hour, that is 25 marks in 60 minutes. So just calculate that for each mark, how many minutes you should do it. And like if it's a 4 marks question, then do the multiplication and obviously you can take out that how much time you need for this. Even कुछ questions तो simple होते हैं. हाँ, कुछ questions पे आपका कम time लगेगा and
कुछ क्वेश्चंस का नेचर जो होगा डिफिकल्ट लेवल थोड़ा हाई होगा, तो हो सकता है वहां पे ज्यादा टाइम लगे, तो यू नीड टू मतलब एडजस्ट योर टाइम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न हो सकता है, कुछ केस स्टडी ही सिंपल हो, ये भी पॉसिबल है। तो आप जब ये डिसाइड करते हैं या जब आप अटेम्प्ट करते हैं, तो टाइम को आप उसी तरह से मैनेज करिएगा। कहीं पे अगर कम कहीं पे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए, ट्राई करिए कि आप पूरे 4 के 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करें। और इसमें एक चीज और है, I forgot to tell you that I said that 60 marks divided by 25, you cannot do that, sorry, because in 60 minutes even your reading of the case study will be important. So you need to see that also, and read the case study in a good manner, but don't devote that much of time that you are not left with the time to attempt the respective questions, right? Sorry, it's okay. Right, each answer in commensuration with marks with which the question carries. Answer should be precise and truthful. और इनफैक्ट ये भी मैं कह सकती हूँ कि जैसा अभी कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके इवन नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव बट एमसीक्यूज आल्सो, कि वेयर यू हैव टू रीलुक एवरी टाइम द फैक्ट्स अगेन एंड अगेन। क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होता है, अब आप उससे पूरी केस स्टडी में या वो वाला लाइन जिसमें लीगल इशू जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज में पूछा गया है वो कौन से पैराग्राफ में था, तो देयर आल्सो समटाइम्स द टाइम इज टेकन। तो व्हाट यू कैन डू इन सच अ सर्कमस्टेंसेस कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सो समवेयर यू शुड हैव मतलब कहीं अपने दिमाग में आपने ये चीज नोट कर रखी हो कि अगर कोई फेमा का इशू है तो कौन से पैराग्राफ में वो इशू है। जब आप पढ़ते हैं तो आप कहीं पे मार्क कर ले कि दिस पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रीवियस टू द फेमा पार्ट। कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जो आपके पीएमएलए के पार्ट को डिवोट करते होंगे, तो अगर आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो नोट कर लिया है, तो जब यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, देन यू कैन अगेन जंप टू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और हमारे जाकर आप फिर से फैक्ट्स को पढ़िए ठीक से, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको बार बार फैक्ट्स पे जाना पड़ता है, देन यू कम बैक अगेन टू द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड अगेन द क्वेश्चन व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। तो ये चीज इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जो टाइम का जो मैनेजमेंट होता है इट इज एन आर्ट एक्चुअली, इट इज नॉट अ साइंस। इसमें आपको बहुत ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आर्ट है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें कि आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से पूरे पेपर्स को कर पाए। There is nothing as like it's fixed, जो मैम ने बोला आर्ट एंड साइंस वाली बात, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, because every case study can be different, and then you need to like if I have said 60 minutes for one case study, it can be even less than that if you are able to get it done in a very quick manner, like it can be finished within 40 minutes or 35 minutes. Just think of the situation wherein the case study is very known to you, or it's a very small case study, like suppose it's just a 2-page case study, even the questions are very less, they don't involve too much of difficult issues, that can be completed within this half an hour, 40 minutes, then that time can be utilized in some other questions. Generally what happens is, I would like to add that this 100 marks question is there, paper is there. Students say that the paper was very lengthy. Yes, it is lengthy, but it is also dependent that how much time you are devoting to a particular question. Suppose a 6 marks question is there and the issue involved is too less, but if you need to see that how much you write, but if that sometime can be, you can borrow that sometime from 6 marks question and apply it to some other place of 4 marks or 6 marks where in the issues involved are more, or there is something more to write on it. So that balance needs to be done. It's like we are working on human psychology kind of a thing. So that you need to see. And time management, like we have been saying, like time management is important. This is all a part of time management. And once you have read the things, you have prepared the things, it is definite that your confidence level will be high, and that will even help you while writing the answer, and the time management will be very good. श्रद्धा, मैं बच्चों को एक चीज खास तौर से बताना चाहूंगी इकोनॉमिक लॉस की स्पेशली, कि आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक लॉ में जब आप केस स्टडीज आपने अगर डाइजेस्ट पढ़ी है या इन द एग्जाम्स में आपने अगर उनके सजेस्टेड आंसर्स देखे एग्जाम्स के, तो यू मस्ट बी फाइंडिंग आउट देयर आर सर्टेन कांसेप्ट्स व्हिच हैज बीन टेस्टेड फ्रीक्वेंटली। तो क्या है कि इकोनॉमिक लॉस में कुछ चैप्टर्स के कुछ सेक्शंस तो ऐसे हैं जिसपे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आप अपने आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस को निकाल सकते हैं और उन
सेक्शंस को स्पेशली अच्छे से थॉरोली उसको प्रॉपर से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सकते हैं. It does not require to mug up that particular section, but you should be knowing what exactly that section deals with and what are the requirements in order to in compliance with to go with that particular section. अगर आपको ये चीजें पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. Whether you pick any of the app, certain sections are repeatedly being asked in the examination. तो ये आप एक छोटा सा होमवर्क जरूर कर सकते हैं. आपने पास अटेम्प्ट्स के पेपर्स देखे या केस स्टडी डाइजेस्ट इटसेल्फ, अगर आपने 55 यानी 55 केस स्टडीज अगर पढ़ ली है तो आई सपोज मतलब आपका रिवीजन क्या, आपका कोर्स बहुत अच्छे से तैयार है. बिल्कुल, मतलब रिपीटेडली वन और द अदर वे, कभी कान सीधा पकड़ के या घुमा करके आपसे उसी चीज को डिफरेंट मैनर में आपसे पूछा जाएगा और आप देखेंगे हर चीज का क्रक्स जो है, क्योंकि प्रोविजन सेम है, लॉ इज सेम, ऑफ कोर्स द आंसर विल बी लेट डाउन इन द सिमिलर मैनर जस्ट कंसीडरिंग द फैक्ट्स गिवन ओवर देयर. उस हिसाब से थोड़ा वेरिएट करेगा. बट यस 55 केस स्टडीज पढ़ने के बाद आप भी डैम श्योर एंड कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस नाउ आई एम रेडी टू अपीयर फॉर द इकोनॉमिक लॉ पेपर. प्लस इसके अलावा 11 केस लॉज हमारे हमने क्विक रिफरेंस में दिए हुए हैं. प्लस आप इसके अलावा एमटीपी, यस, सो मेनी थिंग्स सजेस्टेड, इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि जिसका एंड नहीं है आप लोगों के पास. बस ये है जस्ट द थिंग कि इस समय तक सिर्फ आपको प्रैक्टिस, आपको रिवीजन पे फोकस करना है और ये सब चीजें आप सॉल्व करिए. जितना ज्यादा एज आई सेड यू विल डू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट. एवरी टाइम यू रीड द केस स्टडी, एवरी टाइम यू understand the concept in a more better way and with more clarity. So the next thing is how to attempt the paper. I think we have already given you many, like in the whole session till now, we have told you how to do this and that. So let's solve it with the help of a practical MCQ or Yes, case study from the MTP. Yes, let's take the MTP. Yes, this is the MTP. My dear students, I suppose आप सभी लोगों ने ये MTP के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और देखे भी होंगे. तो मैं आप लोगों से बस ये कहूँगी हम इसमें सब एंटायर MTP डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर ओनली हियर टू मेक यू हाउ टू लर्न द लॉ. रेदर देन हम आपके लिए पढ़ेंगे नहीं, हम आपको चाहते हैं आप सीखे ताकि वो जिस भी फॉर्म में आपसे पूछा जाए यू आर एबल टू सॉल्व एट योर ओन. सो दिस MTP, दिस काउंसलिंग सेशन और MTP जस्ट कि आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करें, कैसे वहां पे एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट इससे एक आपको एक प्रकाश डालने के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ. फॉर एन एग्जांपल, व्हाटएवर टिप्स और आइडियाज और द सजेशंस दैट वी हैव शेयर्ड, वो कैसे यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा इसी चीज पे मैं आप लोगों को थोड़ा आपका टेंशन ड्रॉ करूंगी इसी बाय सॉल्विंग दिस मॉक टेस्ट पेपर. लेट्स टेक केस स्टडी 1 इटसेल्फ. आपने फैक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे. आई एम नॉट गोइंग टू रीड द फैक्ट्स एट ऑल. And I suppose by going to the facts, you can make it out. This case study is a wonderful integration of 4 acts actually. You will finding here the FEMA, PMLA, the RERA, and the Benami Act. So if you see just the question, like if you have not read the case study, which you should have, but you can see RERA is there. तो मतलब आपको सिर्फ एक एक्ट, आप ये नहीं कर सकते कि मैं कोई एक एक्ट छोड़ दूं. ऐसी गुस्ताखी या ऐसी गलती कभी मत करिएगा. पढ़ने आपको सारी चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी स्टडी केस स्टडी में अगर उन्होंने इस तरह से कंबाइंड वे में इंटीग्रेटेड मैनर में अगर आपसे पूछ लिया तो यू विल बी इन अ लॉस. ठीक है. और अदरवाइज देखा जाए तो इकोनॉमिक लॉस में जो भी एक्ट्स है ऑलमोस्ट सभी एक्ट्स बहुत ही कुछ एक्ट्स तो बहुत ही छोटे और इजी हैं. जैसे आप रेरा उठा लीजिए, पीएमएलए उठा लीजिए, बेनामी उठा लीजिए. दीज आर वेरी मतलब कहना चाहिए जनरल एक्ट्स जो आप रोज सुनते आ रहे हैं. आए दिन आप न्यूज़पेपर सुनते हैं, इतने स्कैम्स, इतने स्कैंडल्स हो रहे हैं. तो आप ये सब सुनने के बाद आपको लगता है ये तो मैंने इस एक्ट में पढ़ा था. तो जी हाँ, ये एक्ट मतलब इतने इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं. जब आप इसको एज अ स्टोरी और इसको किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन से जब लिंक करके पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से समझ पाते हैं और उसकी टेक्निकलिटीज और प्रैक्टिकलिटी जो है वो भी समझ पाते हैं. और उस तरह से आप इन क्वेश्चंस को और इन एक्ट्स को मतलब बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो आपने देख लिया, मैंने आपको बताया इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एक्ट्स. आप क्या करेंगे जब इन एक्ट्स को इन केस स्टडी के फैक्ट्स को पढ़ेंगे, एज आई सेड आप रेलेवेंट पैराग्राफ को कहीं ना कहीं अपने माइंड में मार्क कर लीजिए कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ है तो ये पर्टेन्स टू द फेमा. देखो आप देखो जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ देखोगे उसमें जो लीगल इश्यूज हैं इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फेमा पार्ट. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है मिस्टर सुजीत, वो यूएसए जाते हैं पर अपने जो कजन है, नेफ्यू है, उनके इलाज के लिए.
ही इज अ डॉक्टर बेसिकली फॉर असिस्टिंग इन द ऑपरेशन। वो वहां जाते हैं और ही वाज गोइंग द फर्स्ट टाइम टू द यूएसए, उन्होंने बताया। और उसके बाद जब वो जाते हैं वहां कुछ दिन रहते हैं और वो इनका प्लान भी काफी अनसर्टेन होता है क्योंकि इट वाज डिपेंडेंट ऑन द रिकवरी ऑफ मिस्टर अशोक, कि जब वो रिकवर होंगे तब मैं बैक टू इंडिया हो जाऊंगा। उनका जो प्लानिंग ऑफ स्टेइंग था वो भी अनसर्टेन पीरियड के लिए था, डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी। तो वहां गए तो उन्होंने कुछ परचेज भी किया, अगेन इट्स रिलेटेड टू भाई फेमा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रेमिटेंस होगा, कितना फॉरेन एक्सचेंज उसको पे करना है, कितना देना है, कैसे देंगे, तो ये सब चीजें फेमा के अंदर डेल्टे हैं सारे इश्यूज। प्लस यहाँ पे जो कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस का अक्सर कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट्स आर बीइंग आस्क्ड इन द केस स्टडी। तो आपने देखा कि फर्स्ट 3 पैराग्राफ तो आपका प्योरली एब्सोल्युटली फेमा पे बेस्ड है, तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये मार्क कर लीजिए कि दिस पर्टिकुलर पैरास आर बेस्ड ऑन द फेमा इश्यूज। Similarly, moving to the next paragraph, you will find the next paragraphs are based on the PMLA Act. उन्होंने बता रखा है PMLA Act कि वहाँ पे किस तरह से वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। उन्होंने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है वहां से, अगर उन्होंने कोई चीज इंपोर्ट करी है तो उसके रिलेटेड में कंसिडरिंग इट एज अ मनी लॉन्ड्रिंग, वहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को उन्होंने वो कंसिडर करते हुए वहां पे उसका प्रोविजनल अटैचमेंट किया है। तो आप देखो यहाँ PMLA से रिलेटेड इश्यू है। उसके बाद एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है वो कैसे ऑर्डर पास करेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट, तो अगेन दिस इज द इशू पर्टेनिंग टू द PMLA बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि जो इम्पोर्टेड फर्नीचर मंगाया है तो दे आर कंसिडरिंग दिस केस स्टडी दैट इट इज बीइंग आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो उसके अटैचमेंट की बात हो रही है। फिर अगर कुछ पार्टी है वो अगर मान लीजिए एग्रीड है बाय द डिसीजन व्हाटएवर इज गिवन बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी एज रिगार्ड द अटैचमेंट, तो वो कैसे उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, वो कैसे उसका आगे अपनी मैटर इशू को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल ग्राउंड और लीगल ग्राउंड वो कैसे आगे फर्दर अपील कर सकता है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अगेन पेमेंट। आप इसे से मार्क करते हुए चलिए ताकि जब आप क्वेश्चन रीड करें तो यू नो दैट दिस पर्टिकुलर इशू इज रिलेटेड इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको पूरी केस स्टडी एवरी टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो दिस विल डेफिनेटली सेव योर टाइम। और इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के इन लाइन विद जो भी आपके फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को करिएगा। तो हम जैसे कि हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, whether the authority under the RERA can rightly be said to have granted extension of time in completion of Nivas, and in case if SPLP Limited again makes an application for extension of time, then how much maximum time can be granted by authority under RERA once again? So if you see, there is one more thing. There is a multiple choice question at the 2 marks each, and question MCQ is given. It has 4 options. Every MCQ will be having 4 options, and out of this you have to choose one. अब जब हम क्वेश्चन को देखा तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर आपने पढ़ा तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक ही MCQ के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो ये पूछा है कि जो अथॉरिटी है रेरा की, क्या वो राइटली उसने एक्सरसाइज करी है विद रिस्पेक्ट टू ग्रांटिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम। और जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग में पूछा हुआ है, यानी कि 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए। अब आप जब इसके ऑप्शंस देखेंगे तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि आप एक ही फैक्ट को ध्यान में रख के देन उसका आंसर दें, नहीं, आपके आंसर दोनों ही इश्यूज को ध्यान में रख के देना है। तो पहली बात जब हम अथॉरिटी के राइट्स की बात करते हैं कि व्हाट ऑल आर द राइट्स दैट द अथॉरिटी अंडर द रेरा है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रेलेवेंट सेक्शन रेरा के बारे में बात करता है, यहाँ पे उसको क्या राइट्स दिए गए हैं, तो आपको ये रेलेवेंट प्रोविजन पता होना चाहिए। अगर आपको आइडिया है देन यू विल डायरेक्टली गो इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रेरा एक्ट, वरना आप रेरा एक्ट के पेज ही उलट पुलट करते रह जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिएगा कि बेयर एक्ट से बीइंग अ फाइनल लेवल स्टूडेंट, बीइंग अ मतलब जो हमारा इलेक्टिव पेपर का जो नेचर है कंसीडरिंग इट ओपन बुक, आप लोगों को तो डायरेक्ट रेफर करनी ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। और उसके आगे जो इंडेक्स होता है उसमें जो सेक्शन नंबर विद हेडिंग होते हैं उनको रिटेन करने की कोशिश करिए, या उनमें से ही आप पढ़िए ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा सेक्शन किस पर्टिकुलर इश्यू को डील करता है, so that you can directly go to the particular section with respect to the issue which has been given in the question। आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो सेक्शन 6 है हमारा
पे रह रहा था, वो हमें इस चीज के बारे में बताता है। इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब कोई प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वो इनकम्प्लीट है, वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसके लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड की बात की गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 5, ठीक है। लेकिन उसके एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे उसके एक्सटेंशन सेक्शन 6 बताया। अब उसमें इन्होंने बता रखा है कि जो एक्सटेंशन पे है वो कब दिया जा सकता है। इन्होंने उसमें बोला हुआ है अगर कोई फोर्स मेजर है, फोर्स मेजर मींस द एक्ट ऑफ द गॉड, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल एक्टिविटी व्हिच एक्चुअली इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो उस कंडीशन में आपका ये एक्सटेंड किया जा सकता है। बिसाइड्स विद दैट, अगर कोई डिफॉल्ट प्रमोटर ने नहीं तारीफ किया है एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, उस कंडीशन में भी आपको एक्सटेंशन जो पीरियड है वो आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। सो कंसीडरिंग दैट सेक्शन इफ यू सी, तो इट सेज दैट जो मैक्सिमम पीरियड आपका प्रिस्क्राइब है वहां पर इट इज 1 ईयर। अब आप केस स्टडी के अगर रेलेवेंट पार्ट पे जाएंगे तो यू विल सी द रेलेवेंट पार्ट इज गिवन द लास्ट पैराग्राफ। दिस इज बेसिकली द रेरा रिलेटेड क्वेश्चन। जो मैंने आपको कहा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं और आपका रेरा डिस्कस नहीं है, लेकिन हियर दिस इज द पैराग्राफ व्हिच डील्स विद द लीगल इशू पर्टेनिंग टू द रेरा पार्ट। इसमें इन्होंने बता रखा है कि उन्होंने जो कंप्लीशन ऑफ टाइम जो था which got extended by 3 months, उसको उन्होंने 3 महीने से एक्सटेंड किया ड्यू टू अकरिंग ऑफ सर्टेन ड्रॉइट्स। इन्होंने प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ती है जब भी आप एक्सटेंशन लेते हैं, और एक्सटेंशन अगर ग्रांट किया जाता है और उसमें प्रमोटर का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता तो इस प्रॉपर विद रीजनिंग के साथ वहां पे मेंशन किया जाता है। एक बार उन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया 3 मंथ्स का, लेकिन ये भी साथ में कह रहा जा रहा है कि अर्लियर आल्सो द अथॉरिटी हैज ग्रांटेड एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन कंप्लीशन ऑफ निवास बाय 2 मंथ्स, यानी कि पहले भी 2 महीने हो चुके हैं, यानी कि टोटल कितने हो चुके हैं 5 मंथ्स। एग्रीगेट अगर आप देखें तो 5 मंथ्स का टाइम एक्सटेंशन वो दे चुके हैं। और लॉ क्या कहता है, वो एक्सटेंड कर सकता है ऑन द बेसिस व्हाट आई हैव गिवन टोल्ड यू, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन एक्सटेंड बट द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स। 5 मंथ्स अगर हो चुके हैं, इन एग्रीगेट को देखते हैं 5 मंथ्स हो चुके हैं, यानी कि हाउ मेनी मोर मंथ्स आर बीइंग लेफ्ट, कब तक के लिए एक्सटेंशन और दे सकते हैं 7 मंथ्स के लिए। बस यहाँ पे आपने अप्लाई किया है लॉ, आपने एज पर द प्रोविजन यू अप्लाइड इन द गिवन सिनेरियो इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट्स यू हैव ड्रॉन योर आंसर। सो यू विल सी अकॉर्डिंगली, नाउ दीज आर द ऑप्शन, और ऑप्शंस आप देखें कितने नियर है। पर हाँ, ये 2 ऑप्शंस तो आपकी एकदम से ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि एक्सटेंशन तो दिया जा सकता है। सेक्शन 6 क्लियर कहता है कि आपका पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, आप देखें सेक्शन 6 में फोर्स मैच्योर करके वर्ड यूज किया हुआ है जी, और पेपर एग्जामिनर ने बड़े ही प्यार से वर्ड यहाँ यूज कर दिया। तो आप देखें तो बच्चे को 1 सेकंड में लगेगा अच्छा ये तो वही मैंने जो पढ़ा था, बट आपको क्लियर और बहुत ही जैसे कहते हैं ना सटीक निगाह से पढ़ना पर पड़ेगा। जो वॉइड होता है इट इज नॉट अ नेचुरल कैलामिटी, दैट्स व्हाट, और वही बच्चों को कंफ्यूज करेगा। वो सोचेंगे ये तो एक नेचुरल मतलब ऐसी एक्टिविटी थी आउट ऑफ बियॉन्ड कंट्रोल, बट ऐसा नहीं है। रॉइट इज नॉट कवर्ड अंडर द एनी एक्टिविटी व्हिच इज नेचुरली बीइंग कॉज्ड, ठीक है, तो इसके अंदर वो कवर नहीं होता है। लेकिन फैंसी हाँ, वर्ड्स में मत बिल्कुल, मतलब आप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर सेक्शन में एक्सप्लेन है कि फोर्स मीडियो में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बता रखे हैं जिसकी वजह से अगर कोई चीज हुई है, जिसकी वजह से वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाई है, और उसमें प्रमोटर का कोई भी कह सकते हो रोल नहीं है उस चीज को डिले करने में, उस प्रोजेक्ट को, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इवन द अथॉरिटी कैन कंसीडर एंड विद प्रॉपर रीजनिंग इट कैन ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों ऑप्शन तो एब्रप्टली ही एक्सक्लूड हो गए, क्योंकि आपको पता है कि भैया वो एक्सटेंड तो कर ही सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ यू कैन रिमूव फ्रॉम योर चॉइस। ये 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कैसे ही आपके उसमें से निकल गए लिस्ट में से। अब ये बचा क्योंकि दोनों का आंसर यस है, यानी कि उनको अथॉरिटी है। अब दूसरी पार्ट जो पीरियड कहती थी, मैक्सिमम पीरियड की बात की थी, कितने समय तक और ग्रांट किया जा सकता है, तो वो हमने जो फैक्ट्स में दिए हुए थे उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करी एंड इट कम्स टू बी मैक्सिमम फॉर 7 मंथ। 7 मंथ के लिए वो और कर सकता है, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप एक बार कर सकते हैं, एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट टाइम पीरियड दिया हुआ है। So you need to understand this thing. So accordingly, option C will be the correct answer.
तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको प्रोविजन प्रॉपर्ली पता है, देन यू कैन कंक्लूड टू द आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, this one, second one, okay, 1.2. Yes, Shakil, read the question. How much excess Indian currency can be said to have been brought by Mr. Surjit into India from USA, and whether any declaration needs to be given in case of the USD currency notes brought into India by Mr. Surjit to the customs authorities? Yes. So for this, we will be referring the paragraphs. Yes. Come to the paragraph number 1. Yes. आप यहाँ पे देखेंगे तो पैराग्राफ नंबर 3 इट टॉक्स अबाउट कि भैया कि जो मिस्टर अशोक थे उन्होंने डॉलर 6,000 करेंसी नोट किया एज वेल एज इंडियन रुपीस 80,000 एज अ गिफ्ट. अब आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इन लाइन विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितना एक्सेस इंडियन करेंसी मिस्टर सुजीत इंडिया के अंदर ला सकते हैं फ्रॉम यूएसए, और क्या उन्हें कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत है with respect to USD currency note. Please note this is with respect to Indian currency part. Again there are two questions in itself. पहला पार्ट जो क्वेश्चन का पूछता है with respect to the Indian currency कि कितना आप एक्स्ट्रा लेके आए हैं या कितना एक्स्ट्रा वो ला सकते हैं, उसकी एक लिमिट की बात करी जाएगी. सेकंड जो उन्होंने पूछा है with respect to USD currency notes. So don't be confused क्योंकि दो डिफरेंट चीज क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए when you are importing any foreign currency or the Indian currency, which law is applicable to it. तभी आप कहिए फेमा का क्वेश्चन है, फेमा में तो अच्छे लोग घूम जाते हैं. Now is what is being required since many regulations, many guidelines, lot of confusion of course. लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे जाइए जो इस पर्टिकुलर इशू को रेगुलेट करती है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट आप सिचुएशन देखिएगा जहां बात आती है हम एक्सेस ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स की अगर बात करें तो आपने देखा यहाँ पे जो वो कितने रुपीस वो मिस्टर अशोक ने एज अ गिफ्ट दिया, रुपीस 80,000 इंडियन करेंसी. बिल्कुल. और आप सबको पता है जो लिमिट है हमारी एज पर द गाइडलाइंस 25,000. आप सीधा उस अमाउंट में से माइनस करिए, आपको एक्सेस अमाउंट की वैल्यू पता चल जाएगी 80,000 में से. तो इट विल कम अप टू 55,000. अब आप यहीं से देख सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, यानी कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपके 55,000 आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ये दो ऑप्शन को ओवररूल कर दीजिए, अपने इसमें से निकाल दो. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां पूछा जा रहा है यूएसडी करेंसी नोट. इन द क्वेश्चन जो यूएसडी करेंसी नोट दिए थे मिस्टर अशोक ने, इट वाज डॉलर 6,000. ठीक है. और आप जब ये गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उन्होंने क्लियर कट बता रखा है, लिमिट दे रखी है कि कब आपको डिक्लेरेशन देना है और कब डिक्लेरेशन नहीं देना है. इफ यू आर एक्सीडिंग दैट लिमिट यू नीड टू गिव द डिक्लेरेशन. तो ये जो लिमिट हमारी गाइडलाइंस में दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया दैट इज गिवन इज USD डॉलर 5,000. क्लियर कट. यहाँ पे आप 6,000 है, इट इज एक्सीडिंग. सो एज पर द रिक्वायरमेंट वेदर एनी डिक्लेरेशन नीड्स टू बी गिवन, यस, यहाँ पे मिस्टर सुरजीत को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कस्टम अथॉरिटीज को, बिकॉज वो एक्सीडिंग द लिमिट फॉरेन करेंसी को इंडिया के अंदर ला रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन गो विद द करेक्ट आंसर. आप देख रहे हैं ही नीड्स टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन, यहाँ पे ही इज नॉट रिक्वायर्ड. देखिए बहुत बस नॉट लिखते ही आपके आंसर्स बदल जाते हैं और थोड़ा सा और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके थोड़ा ऑप्शन को मोड़ के, लेकिन अगर किसी ने ये सेक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली ही विल बी कंफ्यूज दैट वे. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कब क्या रिक्वायरमेंट है टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. So accordingly option B is the correct answer. Now I would like to add one more thing to this. In this question we have told you about the elimination method where we have said that okay you cancel this portion. But in the examination this is just for solving the questions in the examination condition. However, it can also be like in both these questions, they might have given 55,000 here or here, 55,000 here also. In that case, read each and every option very carefully, very carefully. Like in this, he like 55,000 is there, 55,000 is there, similar. But in this case, he needs to provide declaration to the customs authority. Here they have written he is not required.
Also, it could have been in both the scenarios. They could have written he needs to provide declaration, but they may change the name of the authority or something else. बिल्कुल कर सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट, जस्ट टू नो एग्जैक्टली। जब बच्चे ने प्रोविजन पढ़ा है तो उसने वो इम्पोर्टेंट चीज की किसको अथॉरिटी है, कितने की है, क्या है, ये सब चीजें, उसे कुछ चीजें तो रिटेन करनी ही पड़ेंगी। और दो ही इज हैविंग हिमसेल्फ विद द मटेरियल, ही कैन कंफर्म वंस। एक बार जाके आप कंफर्म कर लीजिए। कई बार ये होता है, हम जो पढ़ते हैं सोचते हैं, समटाइम्स वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बिफोर अटेम्प्टिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, भले आपने इसको 10 बार पढ़ा है, यू आर फॉर श्योर कह रहे मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, just to assure yourself, and then accordingly you may attempt your answer. That's why we say that the options that are given to you are very close to each other. ऐसे एक एग्जांपल भी मैं दिखा सकती हूँ। इसी के अंदर 1.4 क्वेश्चन निकालिएगा श्रद्धा। आप देखिए 1.4 के ऑप्शंस देखिए। अब बच्चे ने ये पूछा गया है कि whether the appellate tribunal was having the authority to requisition या to call for the records pertaining to Mr. Surjit from the custom authority, and whether the appeal filed by the debtor can be entertained by the High Court. अब भैया अगर आप ऑप्शन देखोगे, can you make out difference between option A and option C? Just think from the student's point of view. I cannot, because what I can see is only just a bit of a difference. Apart from that, there is nothing. Because yes, as the appellate authority has the same powers as are vested in a civil code under CPC 1908, and there is CPC 1973 for such matter. देखिए कितना माइनर डिफरेंस है। Here they use a CRPC. Yes. Here they have used a CPC. ठीक है, ईयर देख के तो आपने बता दिया, लेकिन सी द एक्ट आर टोटली डिफरेंट। दीस आर टू डिफरेंट एक्ट्स एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज सेम। तो भैया अगर बच्चे ने ये चीज अगर जरा ध्यान से नहीं पढ़ा, दिस माइनर डिफरेंस, वो गलत आंसर मार्क करेगा। कितना से डिफरेंस? यस, दिस इज द सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, एंड दिस इज द सिविल प्रोसीजर कोड। और अपीलेट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट्स की पावर होती है टू ट्राई एनी सूट, और उस हिसाब से वो अपीलेट ट्रिब्यूनल किसी भी रिकॉर्ड्स के लिए किसी भी ऑफिस को कॉल कर सकता है, कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, जिससे कि वो उस चीज को वेरीफाई कर सके। और इस तरह से अगर कोई उस चीज से डिससेटिस्फाइड है तो वो फर्दर अपील के लिए भी हायर कोर्ट जो भी है उसमें जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमने गिवन केस सिनेरियो में अपीलेट ट्रिब्यूनल के हायर कोर्ट बस हाई कोर्ट, तो वहां पे डायरेक्टर बीइंग dissatisfied with whatever the decision was given by appellate tribunal in favor of Mr. Surjit, तो वो उसके एग्रीड होने की वजह से डायरेक्टर इस अपील को फर्दर ले जा सकता है हाई कोर्ट में। तो मैम इस केस में बच्चों को ये बताएं कि करेक्ट आंसर कौन सा है? Yes, C, because what I said, appellate tribunal has the same power as that of a civil court to try the suit. इसमें मैं आपके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अगर बच्चे ने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक मिस्टेक तो वो ये कर सकता है कि वो अगर सिंपली हम एलिमिनेशन मेथड से चले और उसने दिमाग नहीं लगाया, तो वो ये वाला ऑप्शन तो हटा देगा। ठीक है कि चलो भाई उसने अगर इतना दिमाग लगा दिया 1973 देख के उसने नहीं लगाया, वो यहाँ कंफ्यूज। बिल्कुल, क्योंकि एक्ट का नाम अगर किसी को याद भी रहता है तो वो देखेगा सेम ही एक्ट है, सेम ही एक्ट है और यस यस लिखा है, कुछ अपील भी बस यहाँ पे थोड़ा कैन नॉट का डिफरेंस है, शैल नॉट। अगर उसने इतना दिमाग नहीं लगाया तो थोड़ा आपको ये पेपर इतना ट्रिकी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस पे या और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो वही समझ भी रहे हो, क्योंकि पढ़ना माइंड आपका मतलब बिल्कुल कहना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ चलना चाहिए, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल मतलब उसी ऑर्डर में जो आप चाह रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो उसके साथ आपका जेल करना चाहिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं फिर हम देखना भी वही शुरू कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा जो मैम ने आपको बोला कि आप अपना वो सेक्शन जाके एक बार खोल के जरूर देख लीजिएगा, जस्ट हैव अ ग्लांस, तो आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल। चलो एक लास्ट हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेते हैं। हमने एमसीक्यूज के बारे में तो बहुत ही मतलब उससे डिस्कस कर लिया एट लेंथ कि आप कैसे कर सकते हैं, आपको रीजनिंग में ही देनी है, ऑप्शंस आपका एप्रोप्रिएट ढूंढना है। कई बार ऑप्शंस बहुत सारे 3-4 ऑप्शन, मान लो चारों में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन आपको कुछ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है किसी में, या कोई चीज मिसिंग है, या कोई चीज ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपको जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होता है आपको वो कंसिडर करना है, रेदर देन कंसिडर कि ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है मुझे, उसमें थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन दिए पर वो सही है, और एक में आपको लेंथ थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, किसी ऑप्शन में कुछ ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको डिटेल्ड वाला लेना है, क्योंकि दैट इज मोर एप्रोप्रिएट एंड दैट इज मोर मतलब आपकी इन लाइन विद लीगल प्रोविजन है, तो आप उसको एज अ करेक्ट आंसर चूज करेंगे।
और इसमें आप कंफ्यूजन होके कहीं बी और ए ना मार्क कर दे, अदरवाइज वो गलत करेंगे क्योंकि ओएमआर शीट में आपके ये आंसर्स जाते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन मार्क कर दिए इस तो दोनों में हाँ, से किसी पे भी ना, बिल्कुल, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, आपको अप्रोप्रिएट आंसर को भी चूज करना है और एनी वन आंसर पे ही मार्क करना है। OMR sheets, as you know, वो आपकी डायरेक्टली कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। Had they been like your manual checking things, तो फिर आपको नंबर मिल सकते थे। That shows you have extra knowledge, लेकिन OMR sheet is computerized, कंप्यूटर के पास इतना दिमाग नहीं होता, वो खत्म कर देगा उस बस हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, लुकिंग एट द टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जस्ट कि आपको कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है मैटर बहुत कुछ है लिखने को और हमें कई बार ये कंफ्यूजन कि हम कितना लिखें। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन पूछता है whether the tenement house brought in New Delhi by Mr. Surjit in the name of Mr. Mangal can be considered as benami transaction। आइए, अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द बेनामी एक्ट, तो आपको लिखेगा वहां पे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा चिट्टा पट्टा दिया हुआ है कि भाई कब बेनामी ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, कब उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इन लाइन विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस स्टडीज एज वेल एज आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन में पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू मंगल के केस में कि भैया वो जो प्रॉपर्टी जो है उन्होंने मंगल के नाम पे एक हाउस जो टेनेमेंट खरीदा है, क्या वो बेनामी प्रॉपर्टी में आता है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन की खासियत मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो पहले आप सेक्शन 2(9) में आपको पता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे खरीदार कोई और है, ठीक है, मतलब कि परचेज प्राइस कोई और दे रहा है और प्रॉपर्टी किसी और के फेवर में खरीदी गई है, यानी नाम किसी और के है, पे कोई और कर रहा है। तो इन सिंपल सेंस दैट इज अ बेनामी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे जो कि प्रॉपर्टी जो मिस्टर सुरजीत ने खरीदी थी और किसके नाम पे खरीदी थी, अपने दोस्त मिस्टर मंगल के नाम पे। अगर प्राइमा फेसी आप देखोगे तो कहोगे यार तो सीधा सीधा बेनामी ट्रांजैक्शन के पर्व्यू में आ जाता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे केस लॉज, तभी हम कहते हैं कि केस लॉज ही पढ़िए। केस लॉज में जो डिसीजंस आते हैं डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स। तो वहां पे प्रिंसिपल लेट डाउन है, कुछ सर्टेन फैक्टर्स डिटरमाइन प्रिंसिपल लेट डाउन के लिए जिनमें डिटरमाइन किया गया है कि व्हेन एनी ट्रांजैक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। तो आप बस इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के कंसीडर करेगा। और चूंकि जो ये केस लॉज यहाँ रेफर है हमारे स्टडी मटेरियल में दिया है, इट्स बेटर इफ यू रेफर दैट पर्टिकुलर केस लॉज टू सपोर्ट योर आंसर, मतलब और स्ट्रांगली, ताकि ये चीज रिफ्लेक्ट करे कि यू हैव रेड द लॉ, यू अंडरस्टूड द लॉ, और आपको कब क्या चीज अपने आंसर में, अपने आंसर के सपोर्ट में लिखनी है जो कि आपके आंसर को और अच्छे से सपोर्ट कर सके। लॉ में हर चीज लॉजिक पे, रीजनिंग पे बेस होती है, तो यहाँ पे भी आप उसका केस लॉ का रेफरेंस देके बताएंगे कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने वो प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए, भाई अगर ये फैक्टर उसके अंदर आ रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। अब बेनामी ट्रांजैक्शन में जो मेन फैक्टर होता है, हमें ट्रू कैरेक्टर जानना चाहिए। ट्रू कैरेक्टर के लिए इंटेंशन प्लेज अ मेजर रोल। अब इंटेंशन आप पार्टीज की कैसे पता कर सकते हो, उसके लिए अगेन 4 फैक्टर्स है कि आपके क्या सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है, क्या रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज है, क्या मोटिव्स है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज को आप देखते हैं कि क्या चीज इसके अंदर होता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे बेसिस ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस में जो मकान खरीदा उसके पीछे क्या चीज था, वो उसके फादर ने मरते समय जो अपनी प्रॉपर्टी विल में से कहा था कि आपको ये पर्टिकुलर एक हाउस खरीदना है और ये हाउस आपको एज अ किसी को ऑर्फनेज को दान करना है। तो दिस वाज द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये चीज है। दूसरी चीज उसके अंदर जब हम बात करते हैं उसकी सेकंड फैक्टर जो है आपका रिलेशनशिप, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मिस्टर सुरजीत और मिस्टर मंगल है, दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड, बट यस मिस्टर मंगल इज आल्सो अ ट्रस्टी ऑफ द ऑर्फनेज। रिलेशनशिप आपने बता दिया। तीसरा फैक्टर आपने मोटिव जो ये एक्ट को गवर्न कर रहा है वो ये है कि उसने क्यों अपने फ्रेंड के नाम पे खरीदा, क्योंकि वो ट्रस्टी था, सो दैट इजीली लेटर ऑन दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द ऑर्फनेज। ठीक है, और सब्सिक्वेंट जब हम कंडक्ट की बात करते हैं तो इसमें देखिए आप ऐसा कहीं भी पूरी केस स्टडी में नहीं दिया कि उसने अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए खरीदा हो, कहीं पे भी ये बात नहीं आई है मिस्टर सुरजीत के बारे में। बट यस एक जगह लास्ट में ये फैक्ट जरूर आया था कि उसने जो ये है ना, जब तक उनको पोजेशन नहीं मिल जाता अपने न्यूली अपार्टमेंट का, टिल दैट टाइम दे विल स्टे इन द सेट टेनेमेंट होम। बस दिस इज द ओनली थिंग। तो इसके अलावा कहीं रिवील नहीं होता है कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसने वो प्रॉपर्टी को उसके नाम पे खरीदा है या कहीं भी उसका इंटरेस्ट नहीं था। तो दिस क्लियरली मेक इट आउट कि दैट दिस इज द ट्रू कैरेक्टर, नो वेयर देयर इज एन इंटेंट कि इसमें कोई ऐसा मतलब उसने अपने
बेनिफिशियल इंटरेस्ट या आपने खुद के इंटरेस्ट के उस प्रॉपर्टी को ट्रांजैक्शन किसी तरह का किया उस प्रॉपर्टी का, एंड देयरफॉर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। क्योंकि प्राइमा फेसी जब हमने देखा तो हमें देखते हुए लग रहा था, लेकिन जब हमने इन बाकी फैक्टर्स को सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखा तो हमने देखा कि इट इज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। तो दिस इज हाउ। अब जब अपने आप आंसर्स लिखते हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री लिखने की जरूरत है। आपने ना पूरी ट्रांजैक्शन की वो बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी, ओनली रिस्पेक्टिव पैरा लिखा जहां आपको मेन क्रक्स बताया गया है, आपने सपोर्ट किया विद द रेलेवेंट केस लॉज, ठीक है, और रेलेवेंट केस लॉ से जो भी प्रिंसिपल्स डिसाइडिंग प्रिंसिपल्स थे आपने उसके बारे में बता दिया। देन आपने एक केस लॉ और बताया जहां पे उन्होंने ये बताया कि भाई आपका मतलब जो ये फैक्टर्स होते हैं चार उसको हम क्यूमुलेटिव कंसीडर करते हैं। ये सब केस लॉज आपकी किताब में अच्छे से दिए हुए हैं, एक बार डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लीगल प्रोविजन देन यू एनालाइज द गिवन केस सिनेरियो, ये था और इस बेसिस पे ये सिचुएशन ये फैक्टर्स इस तरह से लेट डाउन और इस तरह से सामने आ रहे थे और अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी या ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो मैम दिस इज हाउ द आंसर विल बी गिवन। इस क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो हमने लीगल प्रोविजन भी प्रॉपरली दिया हुआ है जी। अगर हम देखें तो हमने लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं, वेदर बाय वे ऑफ एक्ट और बाय वे ऑफ केस लॉ। देन हमने अपने एनालिसिस और कंक्लूजन को फैक्ट्स के साथ करते हुए हमने इसका कंक्लूजन भी देखा। So this is how you need to write the answer. It is not necessary कि आप ये वाली लाइन भी लिखें, given case and analysis। आपको provisions भी लिखने हैं और उसके बाद आप बाकी चीजें मिक्स करके एक concrete conclusion दे सकते हैं। और ये जैसे कि 5 नंबर का था श्रद्धा, तो 5 नंबर में ठीक है, आप फैक्ट्स को शॉर्ट में जैसे आपने लिखा, प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल लेटर उसके फैक्टर्स भी शॉर्ट में ही लिखे हुए, फिर भी आप और शॉर्ट में अगर अपनी लैंग्वेज में मोल्ड कर सकते हैं तो कर दीजिए। प्लस आप डायरेक्ट फिर फैक्टर्स के साथ इस आंसर्स को लिख सकते हैं rather than writing again the situation. But you can simply say as per the fact given the question of following are the 4 factors to be discussed in the light of the given situation. आप डायरेक्ट फैक्टर्स और केस लॉस का मतलब गिवन केस को उस फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए एंड कंक्लूड योर आंसर। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, if you have some valid assumption, you may think that no, he was using it for his personal use. If you have a proper support and backing to your answer, you can give an assumption. आप अपने working notes दे सकते हैं साथ में, क्योंकि देखिए केस स्टडी बेस्ड पेपर है, it is application of not only the legal provision but of your mind also. So you can give a valid assumption, and if it is actually what should we say, that it is proper and it is valid in every sense. It should not be some way कि एक पॉइंट को पकड़ के आपने उसे कहीं भी खींच दिया, बट वो उस केस स्टडी को पढ़ के लगता है कि हाँ इट इज जस्टिफाइड assumption that you are taking, तो आप अपने आंसर में assumption लेके भी लिख सकते हैं, but that has to be done only when there is some ambiguity और वो you feel that more than one answer is possible. बिल्कुल वेल सेड, assumptions से आप ले सकते हैं। और प्लस ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स के आए थे, एक कुलदीप राय सोनी ने पूछा था, आई वांट टू नो द टिप्स फॉर गुड प्रिपरेशन फॉर दिस पेपर इकोनॉमिक लॉ अलोंग विद सम अदर 3 पेपर्स ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो ऑलरेडी 4 पेपर्स तो हमारे डिस्कस हो चुके हैं एमटीपी, तो आई होप वहां से आपने बेनिफिट ड्राइव किया होगा। एज पार्ट इज द इकोनॉमिक लॉज ऑफ बीइंग कंसर्न, तो आपको हमने ऑलरेडी बहुत कुछ स्मॉल टिप्स, ऑफ कोर्स हमने जो भी है स्मॉल एफर्ट्स जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस मेनी आइडियाज, एडवाइसेस एंड सजेशंस, एंड यू नो आइडियाज जो होते हैं ना बेसिकली वो तब तक यूजफुल नहीं है अनलेस आर बीइंग यूज्ड, और इसीलिए हम आपसे उन आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। कई बार जो होता है ना, हम ये कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स होती है मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास जो प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आइडियाज। सो आई थिंक व्हाटएवर आइडियाज वी आर गिविंग प्लीज यूज इट, क्योंकि जो यूज चीजें होती है वो ज्यादा ब्राइट, हम यूज कीज होती है आपने देखा वो ज्यादा ब्राइट होती है। तो सिमिलरली हम इन आइडियाज को यूज करें बिकॉज दे डेफिनेटली विल हेल्प यू कि आपने अपनी जो चीजें लिखी हैं उसमें आपका एनहांस ही करेगा आपकी क्वालिटी को, और एक पॉलिशिंग टच देगा, एक प्रोफेशनल टच देगा जो कि एक्सपेक्टेड है, एंड डेफिनेटली इट विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आप जैसे लिखते हैं विदाउट पुटिंग एनी सेक्शंस, अब तो आपके पास ओपन बुक है, एवरीथिंग इज लाइंग इन योर हैंड्स, आप आराम से सेक्शन नंबर भी कोड कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कौन सा करना है। तो इसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिलेट कैसे करना है, और रिलेट करने के लिए आपने वो एक्ट अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो,
तभी आप किसी भी गिवन सिचुएशन को, लीगल इश्यू को रिलेट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोविजन में जा सकते हैं और अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं. So already Kuldeep has Soni, we have already discussed all these things. Then Tanya Shetty has asked one thing about it कि आपके एक सरफासी का ये एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो where she was saying there was a difference in the provision as well as the case center. So my dear Tanya, this is a thank you for bringing our to notice, and I'm humbly accepting this thing कि इसमें technical error था थोड़ा सा. Actually there has been an amendment with respect to section 6 जिसमें आपका combination की बात की गई है, जो regulation of combination है उसके regarding provision दिया गया है, जहाँ पे इन्होंने ये बोला है जब नोटिस होता है कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज आपस में मर्ज करती है या अमलगमेट होती है, तो what happens when they enter into any kind of acquisition or acquiring, तो वो क्या करता है, they serve the notice to the commission. तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ नोटिस बोला गया है, बेसिकली it is of हाँ, तो वहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि जो आपका नोटिस पीरियड रहता है इट शुड बी 30 days. So kindly go with the 30 days given in the case study booklet, not with the study material where it is given 7 days. So please take a heed of this. So with this we would like to end the session और हम होप करते हैं कि आप स्टूडेंट्स से मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव किया होगा इस सेशन से. With this intent, we wish you all the best. Thank you. Thank you.